Okay, fantastic, guys. Hi, everyone. It's wonderful to have you all here. This is Ashish Kyal, Friday at 4. It's going to be an amazing journey of what we are going to look at. Uh, uh, Nifty time cycle at important juncture. Nifty is at important juncture. Uh, and बहुत ही क्विकली इट्स संदीपन, इट्स ऑलवेज लवली टू हैव यू और दीपक। कौन कौन है यहाँ पर जो मेरे साथ में है अभी? मोहन, सुप्रिया, लवली टू हैव यू ऑल हियर। मनोज, अनिल, फैंटास्टिक गाइस, राज, सुशोन, lovely. So it has been a lovely move, and people who are there on YouTube, are you able to hear me out loud and clear? Are you able to see me? I'm just going to ensure कि आप लोग यहाँ पर हो मेरे साथ में. This is the I'm just going to share it across very, very quickly on my YouTube also. And oh, wow, there is some issue. I think Google keeps signing me out of my own account every time, and I have no clue why. So just give me a second. I'm just going to sign in because there are people who are there with me on YouTube. उनके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी देख पा रहे हैं। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। एंड व्हाट अ मूव ऑन मार्केट, राइट? इट हैज बीन लवली, इट हैज बीन अमेजिंग। एक पैटर्न जो हेड एंड शोल्डर टॉपिंग पैटर्न आप सभी को दिखा होगा और देखा होगा, और वो टॉपिंग पैटर्न के साथ आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक हियर अगेन ऑन द यूट्यूब। इफ ओके, सुपर। तो दोस्तों, टाइम साइकिल इफेक्ट ऑन गूगल, इट इज सिंपली सुपर। मतलब बहुत ही कोइंसिडेंस है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पोक विद ट्रम्प एंड सो द मार्केट इज अप। और इज इट 12th ऑफ दिसंबर एंड सो इज द मार्केट अप? क्या लगता है आप लोगों को, कौन सा वाला ज्यादा लॉजिकल और ट्रेडेबल इवेंट है? मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं। संदीप, ऋषि, विनय, सत्य, नितेश, क्या लगता है? मतलब मोदी ने फोन पे बात की इसलिए मार्केट रैली हो गया कि ट्रेड डील होगी, कि मार्केट को करना वही था जो करना था? भाव भगवान छे, समय बलवान छे, ट्रेडर पहलवान छे, हुआ वही जो उसे करना था। एंड यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त वे से टाइम साइकिल लुक्स मोर प्रोमिनेंट, मोर ट्रेडेबल। एंड यहाँ पर ये जबरदस्त काम करता है। एक पैटर्न है। पैटर्न के पहले मैं एक पोल लेना चाहता हूं। पीपल, आई एम टेकिंग अ वेरी क्विक पोल राइट नाउ। एंड यहां पर मैं ये पूछना चाहता हूं, निफ्टी का ट्रेंड आने वाले वीक में क्या होगा? निफ्टी ट्रेंड इन द कमिंग वीक, इज इट अप, इज इट डाउन? यहां पर आने वाले वीक में निफ्टी का ट्रेंड क्या है? एंड एक और कैमरा जुड़ गया, आप देख पा रहे हैं क्या? ये मेरे कलीग का कैमरा है लेकिन वो विजिबल नहीं है। मैं उन्हें हाइड कर देता हूं यहां पर वेरी क्विकली। ओके, पोल ले रहा हूं, आने वाले वीक में निफ्टी अप है कि डाउन है? सिल्वर भी रॉकेट हुआ है, बिल्कुल, बिकॉज सिल्वर का जो प्राइस एक्शन है और टाइम साइकिल है सपोर्ट कर रहा है। सुपर। आई एम एंडिंग दिस पोल नाउ एंड पीपल ऑन यूट्यूब, इफ यू वांट टू जॉइन मी ऑन द प्लेटफॉर्म, यू कैन जॉइन मी वेरी क्लियरली ऑन जूम प्लेटफॉर्म। ये पोल मैं एंड कर रहा हूं यहां पर। 89% ऑफ द पीपल आर सेइंग इट्स गोइंग टू बी अपसाइड। यार, कल तक तो सारे लोग बेरिश बोल रहे थे। मुझे लग रहा था खाली मैं ही हूं जो बोल रहा हूं कि यहां से अगर शॉर्ट कवरिंग, मैसिव शॉर्ट कवरिंग वाला शॉर्ट वीडियो देखा था क्या आपने? गिफ्ट निफ्टी तो बाद में ऊपर गया। मैसिव शॉर्ट कवरिंग का वीडियो तो मैंने पहले ही निकाल लिया था। एंड आई मेंशन्ड अबाउट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग, एंड इट वर्कड आउट ब्रिलियंटली। दिस इज नॉट अबाउट बूस्टिंग की मैंने कहा था, इट्स अबाउट शोइंग यू time cycles actually work. Time is a wonderful component, and if you know how to apply it correctly, it will actually work for you. So you need to know how to use it, you need to know how to combine it, and it works amazingly well. यहाँ पर चलिए अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और देखते हैं कि क्या लग रहा है यहाँ पर मार्केट का। डेली चार्ट पे एक फेल्ड पैटर्न ब्रेकडाउन भी मैंने कल एक ट्वीट किया था। कौन कौन है जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करता है? एक बार बहुत ही क्विकली थम्स अप देना, एवरी वन ऑफ यू। कौन कौन है ट्विटर पे? आप लोग फॉलो करते क्या? ट्विटर की लिंक शेयर कर दीजिए डायरेक्टर साहब सभी के साथ में। मैं ये चार्ट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, आर यू ओके? फैंटास्टिक।
एंड साथ में व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना नहीं भूलना, बिकॉज देर इज अ व्हाट्सएप कम्युनिटी ऑल्सो. यू कैन नीड टू ज्वाइन इन दी व्हाट्सएप रिसर्च कम्युनिटी. मैं एक बार आप लोगों के साथ में वो QR कोड शेयर कर देता हूं सभी के साथ में. सो यू कैन ज्वाइन ऑन दी व्हाट्सएप कम्युनिटी ऑल्सो. यहाँ पर फिर मैं चार्ट पे आता हूँ. एक बार व्हाट्सएप कम्युनिटी QR कोड निकालिए, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए. वंस यू ज्वाइन इन, देन you will be able to get any updates, alerts about markets, about whatever I'm seeing, charts and everything. So do ensure आप यहाँ पर ज्वाइन करें. You can just scan the code and join. बहुत ही फटाफट. Once you have done that, let me know. Okay, चलिए मैं यहाँ पे अभी मेरे चार्ट पे आता हूँ एंड शेयर करते हैं ये सिंपल सा चार्ट. ओके, यहां पर ये चार्ट दिख रहा है सभी को. इट्स अ क्लासिकल चार्ट. अगर कोई इस चार्ट को इधर देखेगा तो क्या लगेगा? सुपर टॉपिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ब्रेक डाउन, रीटेस्ट ऑफ अ नेकलाइन एंड अ रिवर्सल. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ब्रेक डाउन, रीटेस्ट एंड अ रिवर्सल. लेकिन मैंने लिखा था यहां फॉल्स ब्रेकआउट है एंड वापस से प्राइसेस ने रीटेस्ट किया. डू यू नो व्हाई? एंड इट इज reversed back on the upside. Reverse back on the upside. If I go on the daily time frame chart, I've been talking about this date. I can be wrong. It's not always going to be on the same line. It can be dynamic. Time is a dynamic component. There is a date which is, और एक वीडियो भी बनाया था, ये मैं निकाल लेता हूँ हेडलाइन, which is from this level that price can reverse back on the upside with a false breakout, and this is the date. So overall, we can see that this reversal happened because the time is on the buy side. Many times you will see that the patterns actually fail. The patterns fail because time is not supportive. So time को देखना है. और यही मेरी प्रॉब्लम थी जब मैं टेक्निकल एनालिसिस स्टडी कर रहा था 2008 2009, ट्रेड कर रहा था. यही दिक्कत आ रही थी यार. मैंने पैटर्न तो सही देखा, प्राइस एक्शन सही था, ब्रेकडाउन सही आया, लेकिन पैटर्न चला नहीं, फेल हो गया. ऐसा हुआ है किस किस लोगों के साथ? ऐसा हुआ है कि ब्रेकडाउन आया लेकिन पैटर्न फेल हो गया और रिवर्स हो गया, और हम सोच ही रहे हमने क्या गलत किया. होता है ऐसा आपके साथ? शेषादेव बोल रहे हैं, भागीरथ बोल रहे हैं. शैलेश, सभी के साथ होता है ऐसा. तो इसका कारण होता है कि वी आर नॉट लुकिंग एट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. When we are in the phase of time, the chances of the pattern working increases, because when you are buying, you are not only buying price, you are buying both price and time. हम दोनों चीज बाय कर रहे हैं, वो ध्यान रखना है. We are buying both price and we are also buying time. We are buying both price and time, and so it's very important to keep a watch on both of these things, that price or time पे. Now, how do we derive time and how do we look at this simple aspect of time trading along with प्राइस एक्शन? ये दोनों को कैसे कंबाइन करना है मैं आपको बताता हूं. पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू आइडेंटिफाई अ रिदम. सी, टाइम इज द हार्ट बीट ऑफ द मार्केट, एंड निफ्टी हार्ट बीट beats at 55 days time cycle, and we managed to reverse with 3 candlestick rule back on upside. एक ही इंडिकेटर अगर आप नीचे देखोगे, इज टर्निंग बैक हायर अगेन यहां पर. एंड ये तीनों चीज को अगर हम ठीक से कंबाइन करते हैं, वी विल बी नोइंग हाउ इट्स मूविंग अराउंड. सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? द एक्सपेक्टेशन इज दैट ओवरऑल ओवरऑल फ्रॉम वेव पर्सपेक्टिव, दोनों चीज से देखते हैं हम. पहले तो वेव पर्सपेक्टिव से देखते हैं.
From wave perspective, we can see that wave F is complete, wave G is ongoing as of now. ठीक है, और ये एक ही दिन का मूव है. आपको चार्ट दिख रहा है क्या? There are some people who are not able to see the chart. Let me just reshare it across if you are not. Okay, everyone is able to see the chart now. Okay, दिख रहा है अभी? Okay. So if we are looking at this chart, we can clearly see that after forming a low here, there is a support. This moving average is also from derived using time cycle. And we are in this leg of time. Now, basis of this leg of time, we are started to move higher. So the time is supportive on the buy side. यहां पर अगर मैं आवरली चार्ट पे जाऊं, now what is that we are expecting? Overall नीचे एक पैटर्न कंप्लीट हुआ, फॉल्स ब्रेक. Now who is going to get trapped here? I'm asking. Who is going to get trapped here? ये लेवल पे कौन ट्रैप होगा? यहां पर इस लेवल पे कौन ट्रैप होगा? सेलर्स ट्रैप होंगे. ओके, बुल्स को तो यहां ट्रैप किया, सेलर्स को यहां ट्रैप किया, रिवर्स हुआ, फिर से ऊपर आया, which means sellers got trapped very clearly. AK indicator is still on the buy side. एक और जो इंडिकेटर बहुत जबरदस्त काम करता है उसका नाम है प्रिंग स्पेशल के. ये दूसरा प्रिंग के कहां से आ गया? प्रिंग स्पेशल के इज अ वेरी वेरी पावरफुल इंडिकेटर and it works extremely well. This is a Pring special K, which helps us to derive cycles. This is a very bigger time frame cycle. You can apply it even on 5 minutes. You can apply it on hourly. Now, this indicator actually provides the entire cyclicality if you're looking at the daily time frame chart. So let me show you on the daily chart. If you're looking at it, prices move in the form of rhythm. Every specific time it forms a low here, reverses up, forms a low here, reverses up, forms a low here, reverses up. So there is a rhythm, and we are trying to capture that rhythm on different time frames chart. This Spring Special K, you can apply even on a 15 minutes time frame chart. Even on a 15 minutes time frame chart, आप इस specific concept को apply कर सकते हो. Let me show you on a 15 minute. अगर मैं इसे apply करता हूं तो क्या रिजल्ट मिलता है मुझे, और ये इंडिकेटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आई हैव नॉट टॉक्ड मच अबाउट इट बिकॉज दिस इज प्योर टाइम इंडिकेटर. दिस इज नॉट अबाउट, दिस इज अ प्योर बेसिस ऑफ टाइम इंडिकेटर. दिस इज अ 15 मिनट्स निफ्टी चार्ट एंड केएसटी एक है, केएसटी और एके तो है ही, बट अगर आप टाइम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कौन कौन है जो टाइम इंडिकेटर टाइम ट्रेडर बनना चाहता है, you need to know about this indicator. If you want to become a time trader, then you cannot miss knowing about this one simple indicator, which is Pring Special K. This one indicator can provide you a very clear outcome. When it is above the zero line, it indicates time on a bigger time frame has turned up. Below the zero line, मतलब time अभी sell side पे. Rising, rather zero के अलावा भी rising is a positive sign, falling is a negative sign. यहां पर अगर आप देखेंगे इस डेटा में, एंड कैन यू सी अ रिदम हियर? सिस्टमेटिक, ये 15 मिनट का चार्ट है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना भाई आपको? 15 मिनट्स का चार्ट है, एक सिस्टमेटिक वे से दिख रहा है क्या साइकिल? यहां पर लो बना, यहां पर लो बना, यहां पर लो बना, एंड अभी हम कहां हैं? सो अगर मैं एक साइकिल बनाता हूं, एक रिदम बनाता हूं इस के बेसिस पे यहां पर, कैन यू सी दिस रिदम? I'm not sure if I'm trying to teach you something which is very very timely, but not sure कि आप लोग शायद समझ रहे कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त टाइम का कॉन्सेप्ट है. ये रिदम दिख रहा है क्या आपको? यहां से यहां पर लो बना, यहां पर लो बना, यहां पर लो बना, यहां पर क्या बनना चाहिए हमारा? मतलब कैन आई से वी आर इन दैट जोन ऑफ फॉर्मिंग अ वेरी क्लासिक लो हियर. वेरी क्लासिक लो. मैं यहां से लाइन हटा देता हूं, which means एक और चीज मैं करता हूं यहां पे, एक और चीज. आई एम जस्ट गोइंग टू पुट आउट सम टाइम साइकिल लाइंस डालता हूं, तो आपको थोड़ा सा और सेंसिबल वे से समझ में आएगा. यहां पर मैंने साइक्लिकल लाइंस डाल दी.
Can you see now? Now you will be able to relate it where. Can you see the rhythm? Can you see the heartbeat of the market? If you are able to see this heartbeat, trust me, you will know how it actually works. Heartbeat दिख रहा है क्या यहाँ पे? If you are looking at this chart from here, market formed a low. This is a much very big time frame chart. From here, we rallied back on the upside classic. From here, we rallied back on the upside classic. We are just here. It is just starting again. I think yahan se another major up move can start. Okay. And someone told me a day back, why are you always bullish? Tell me, did it is it better to be bullish in this market right now? Yes or no? एंड आई एम नॉट ऑलवेज 2 दिन पहले तक गिर रहा था मार्केट यार, डेली ट्रेंड नेगेटिव था तो शॉर्ट टर्म में बेरिशनेस थी, बट मीडियम टाइम अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, एक दिन का फॉल आता है, क्वेश्चन मार्क व्हाट हैपेंड टू द बुल मार्केट. Bull market is not for short term. Bull market means 2003 to 2008. Bull market means 2013 to 2017. Bull market means 2021 till 2023. Bull market means now what is going on is for next 3 years of bull market. In 3 years of bull market, these short term corrections will be there. You need to understand that very systematically. And if you are someone who understand this mind, this concept, you will be able to apply it in a very proper fashion and it will work. समझ में आ रहा है क्या? So overall, if I'm looking at this, the overall momentum is going to be increasing. Now, once I know that your time सही है, तो bearish, tell me, एक एक चीज मैं आपसे पूछता हूं. प्राइस एक्शन बेरिश है, ठीक है, यहां पर टॉप बन के प्राइस एक्शन बेरिश है, टाइम बुलिश हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं? When you are buying a market, are you buying only price or are you also buying time? अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है जो, say for example 2009 you bought Reliance, until 2017 Reliance never gave you any money because it worked in a broad range. Price wise nothing happened, it was there where it was 8 years prior. Time wise you lost those 7-8 years of opportunity. So you have to understand, when you buy a stock, you are not only buying price. When you buy a stock, you are also buying time. Every trader is focusing majorly on price. Very few traders are focusing on time. And that's why it is crucial, when you're focusing on time, you will be able to see this kind of rhythm. When you see, and this is not only for Nifty, you can do that for silver, you can do that for gold, you can do that for bank Nifty, you can do that for currency. किसी ने सोचा था currency at lifetime low, which means USD/INR at lifetime high, bank Nifty at lifetime high, Nifty is just almost to the high. क्योंकि हर एक एसेट अपना एक रिदम फॉलो करता है, एंड दैट रिदम वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट. इफ वी आर राइट, इट वर्क्स फॉर अस. इफ वी आर रॉन्ग, डजंट वर्क फॉर अस. सो ये बड़ा टाइम साइकिल था बेसिस ऑफ प्रिंग स्पेशल के. सो इफ यू आर लुकिंग एट निफ्टी इज following, do you want to know the period of this time cycle? Do you know what is the period? The period of this time cycle, I just drawn it. 1482 minus 915, 567 on a 15-minute chart. Is falling 567 period time cycle on a 15 minutes chart. Brahmastra participants hai kya yahan pe, guys? The Brahmastra participants, everyone, how many of you are Brahmastra participants here? This is okay. प्लीज फोकस हियर, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट मेंटरशिप सेशन होने वाला है, अभी नहीं जैन में होगा वो, जो मेंटरशिप सेशन है, this is going to be the focus. We have worked on wave theory. Now we are going to work on very closely on time concepts. So understand this, because इसके ऊपर और डिटेल में हम जाने वाले हैं. Okay, everyone. Yeah, Salil है यहाँ पे. We saying you are slowly changing my trading style. Thank you very much. Nifty is following a 567 period of time cycle on 15 minutes chart, derived using simple aspects of spring spatial K, which is the
टाइम इंडिकेटर। ओके, यहाँ पर क्लियर है ना एवरी वन ऑफ यू? नाउ लेट्स गो बैक टू वेव थियरी। मेरे ख्याल से आप लोग ने तो टाइम के चक्कर में बोर हो जाओगे, मैं नहीं चाहता। लेट अस गो बैक टू वेव थियरी एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस इज अ प्रोबेबल सिनेरियो। ओके, नेक्स्ट डे अगर मार्केट ने कुछ और किया, वी माइट हैव टू चेंज अवर स्टैंड। नाउ एज पर द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट देखते हैं। वीकली बहुत जरूरी है, वीकली देखना। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं थ्री कैंडलस्टिक रूल, पता है आपको? आप लोग हो क्या? एंड गाइस बिफोर आई मूव ऑन, I just want to tell you whatever we are doing here is purely learning perspective. Huh? We are SEBI registered research analyst. There is always a risk. There is no guarantee in the market. Maintain stop loss. Do understand कि मार्केट में गारंटी नहीं होती है, प्रोबेबल होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। ओवरऑल थ्री कैंडलस्टिक रूल के बेसिस पे ये मार्केट वीकली चार्ट पे जो बंद हुआ है अभी भी बेरिश है कि बुलिश है? जो सही आंसर देगा देखते हैं। आई एम वॉचिंग कौन कौन सही आंसर दे रहा है यहाँ पर बेसिस ऑफ द थ्री कैंडलस्टिक रूल। मार्केट इज स्टिल बेरिश और बुलिश। फैंटास्टिक नलिनी, सनी, भागीरथ, सौरभ, आप भी हो, कबीर, पारस, धर्म, नीतीश। बुलिश ही वीकली ट्रेंड डिड नॉट चेंज। डेली ट्रेंड पॉजिटिव। साइकिल बाय पेयर। आवरली चार्ट बाय पेयर। तो कौन से डायरेक्शन में पैसा बनेगा अभी? बाई साइड पे। कभी तक व्यू देखिए, व्यू क्या है? नाउ देर इज अ पॉसिबिलिटी वी माइट हेड टुवर्ड्स 26,400, 26,600। ये फॉल्स ब्रेक हुआ है एंड देर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज FLD ऑल्सो। डू यू वांट टू नो अबाउट FLD? यू माइट नॉट थिंक यार ये कौन से इंडिकेटर में लेके आता हूं, दीज आर टाइम इंडिकेटर्स एंड इट वर्क्स। व्हाट्स द प्रॉब्लम? So FLD का पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हुआ है। FLD is a line which is again derived using cycle which shifted on the right side and it is resulted into a positive crossover. I was very nervous 2 days back यार, ये नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है, साइकिल लाइन पे कॉन्फ्लिक्टिंग साइन है यार, इसे ऊपर जाना है। 12 तारीख का अगर ऊपर नहीं गया तो यार पता नहीं क्या हो रहा है। मे बी 2-3 days plus minus, but it has to go up. That was my stuff. And market obliged. The exact reason why I started building up on cyclical theory is absolutely the same concept that I'm sharing across right now with you all. यार ये पैटर्न फेल क्यों हुआ? Every time when a pattern failed, the only question in my mind was what changed, why the pattern failed, and then I realized it was time. So the upside initial target, I'm expecting 26,400 that Nifty can move towards मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। और ये FLDA सो 26,400 यहां पर अगर हम टारगेट लिखते हैं, क्योंकि लिख इसलिए दे रहा हूं, समवन मेंशन कि सर आप जो बता रहे हो वो थोड़ा सा लिखेंगे तो याद रहेगा। एंड ऑल्सो वेयर विल दिस गो रॉन्ग, वो भी इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द रिस्क, व्हाट इज द स्टॉप लॉस? नथिंग इज रिस्क फ्री एज आई मेंशन, you need to understand. So the target is 26,600 at least, 26,400 short term, but we should eventually head towards 26,600 levels from here on. That's what I'm looking at overall. And on the downside, we should not break 25,728. 25,728 कोई भी हालत में अगर ब्रीच हो गया तो गड़बड़। सो वी शुड नॉट ब्रेक। इनफैक्ट 25,930 भी ब्रीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे वापस आगे जो आज का लो है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो माय सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट इज गोइंग टू बी 25,930। सपोर्ट इज 25,930 and 25,728 is the ultimate level. So how is 26,600 derived? I've shared my observation Nifty in the mentorship program. Salil कह रहे Ichimoku के basis पे है. Lovely, and it came today, and you were able to ride it. Super, super. Fib retracement from 7th to all-time high. We can see that market has taken support at crucial levels. Okay, classic. Absolutely. I'm glad to know आप लोग जो mentorship में सीख रहे हो apply कर पा रहे concepts को. So it is always lovely to see that. So यहाँ पर अगर आप देख रहे हो
we can see that the overall chart pattern that we are as of now observing basis of it is okay, I was just checking, is 26,600. That's my target, and 25,930 is my support. If that 25,930 breaches, ज़्यादा दूर भी नहीं है, then I'll be on the sidelines just to wait and watch कि क्या हो रहा है. And if it manages to be sustaining above this level, positional, I'm now entering into positional because market can move in form of gaps. लव योर एनालिसिस एनी टाइम फ्रेम. वी आर इनटू टाइम साइकिल. एक काम करते हैं दोस्तों, कल आप लोग अवेलेबल हो? 13 दिसंबर है, 13 तारीख दिसंबर मॉर्निंग को 11 बजे एक मास्टर क्लास के लिए. टाइम की बात वहां पर करें, कितने लेवल पे जाएगा, कौन सा साइकिल यूज होगा. बहुत टाइम से हम वेव थियरी देख रहे थे. शेल बी मूव ऑन अनदर 800 पॉइंट्स मूव ऋषि? I don't want to commit it too soon to say that, because hota kya hai na, people, I don't want. I think another 600 points more, another, but too soon, as I said, too soon to say that. लिंक शेयर करना, कल का वेबिनार लिंक शेयर करना प्लीज. wavestrategy.com/webinar, वो लिंक है, वो शेयर करिए सभी के साथ में. एंड यू कैन बी, Nifty is ready for next big move. You cannot miss it, which is going to be on 13th at 11 a.m. We are going to apply it very clearly. हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में अप्लाई करेंगे. स्कैल्पिंग के लिए अप्लाई करेंगे, शॉर्ट टर्म के चार्ट पे भी अप्लाई करेंगे यहाँ पर. लेकिन आपको जाकर रजिस्टर करना है. जूम लिंक पे फ्री वेबिनार की लिंक शेयर हुई है, मैं यूट्यूब पे भी दे देता हूँ इस लिंक को. एवरीवन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन. यहाँ पर जाके आप लोग भी ज्वाइन करिए. Okay, there are questions here. Sir, I can see you are talking about a lot of mentees. How do I be a part of it? Okay, so suppose how many of you are wanting to be a part of our ongoing mentorship? Not ongoing, new mentorship program. Ongoing तो already काफी कुछ हो चुका है. आप mentorship में पार्ट बनना चाहते हैं क्या? मैं mentorship की लिंक शेयर करिए लोगों के साथ में who wants to be with me for the mentorship program. And दीप कह रहे सर यू आर द बेस्ट हेड्स ऑफ टू योर नॉलेज. नॉलेज के भंडार हो आप. इट्स माय पैशन. यहाँ पर वेरी क्लियरली okay, and I'm also going to take a very quick poll for how many of you want to be for Brahmastra, the mentorship session. यहाँ पर कैन यू टेल अबाउट प्रिंग इंडिकेटर? प्रिंग इंडिकेटर जो मैंने आपको यहाँ पर प्लॉट करके दिखाया है, दिस इंडिकेटर इज अ वेरी different indicator, which is, I'll not be able to explain much, but if you know this one simple indicator pring, आप इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो. इसके बेसिस पे आप कोई भी स्टॉक पे जाके वो एक वन इंडिकेटर लगा के डिराइव कर सकते हो उसका साइकिल. एंड इफ when prices are near this cycle and reversing, so price action confirms and time confirms, दोनों चीज अगर कंफर्म होती है तो जबरदस्त मोमेंटम बनता है. सो ये दोनों चीज का कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? हाँ, देर इज अ मेंटरशिप ऑफर पेज, लिंक इज शेयर्ड अक्रॉस विथ यू ऑल. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस मेंटरशिप प्रोग्राम. आई एम शेयरिंग द लिंक विथ एवरी वन ऑफ यू. यहाँ पर sir, what do I get of this mentorship program? Okay, I'll just explain very quickly for people who are wanting to know. Let me just share across my screen very quickly. So you will, in this mentorship program, you learn about stock selection, कैसे करना है. जैसे हमारा अभी लास्ट सेशन था वेव थियरी के ऊपर, कैसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है हमें, हाउ टू गो अबाउट इट, एंड why I tweet what I tweet. मतलब I just put across what I see as a research and I share it across with everyone. So why I do what I do, everything I explain in this mentorship program. You learn about time cycle. So there you will be a part of Kyal Chakra, which is exclusively for mentees only. Will be a part of it, which is going to be in Jan. You will be a part of the premium community. You will be learning about stock selection algos. You will be learning about simple steps that works in the market. So that's what we do. Sir, can okay, एक 10K का टोकन भी शेयर कर दीजिए. Someone who wants to register for Brahmastra, you can also be just register by paying a 10K token. The best indicator is Ashish Kyal tweet
indicator now. The best indicator is, there are two indicators. Someone asked me, what are the two indicators that you use always on the that you cannot live without? मेरा एक दो आंसर है, मतलब एक आंसर है, दो उसके ये है। एक तो टाइम, विदाउट टाइम यू कांट ट्रेड, एंड दूसरा है प्राइस, यू कांट ट्रेड विदाउट प्राइस। Oh, I don't know. There is some firecrackers happened behind my chair. I don't know. Some symbol makes it happen, I think. I don't know. Uh, on the Zoom, not actually. When Nifty will reach 26,600, कल बात करते ना सत्यनारायण. We'll talk tomorrow for the when this is going to happen. We'll talk it out tomorrow कि कब होने वाला है, कब तक होगा, वो सारी चीजें हम बात करेंगे उसके बारे में very clearly. Okay, there is another question here, sir. I am already a part of Trishul, so can I be a part of Brahmastra? Bilkul. Why not? You'll be attending Brahmastra Trishul again, and you'll be attending Time Cycle also as a thing, and mentorship sessions हमारे जो होते हैं वो भी आप attend करोगे. So definitely, why not? You can be a part of it. Would you, same thing happened around wave C in daily time frame chart and the market went down from there? Same thing happened around wave C in daily time frame chart and the market went down from there. Let me just check what wave C possible. लेकिन C में उसने टच किया था नया, इधर नहीं किया, एंड वेव C के साथ ये G है. वेव G अगर ऑन गोइंग है तो G शुड आइडियली बी एटलीस्ट 61.8% ऑफ A. A was pretty big up. So basis of that, I think it is too soon for G to complete. If 25,798 breaks, लेकिन हम जोन में है यार, मतलब then I have to sit and break my head कि हो क्या रहा है. There are times when something which is very rare happens. Suppose some announcement event happens, something very rare. Then I'll break my head and think कि क्या पैटर्न बन रहा है. Unless I know what is the pattern for me, I can't trade. अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे पैटर्न चाहिए. पैटर्न के बिना मैं ट्रेड ही नहीं कर सकता. So if I come here, I need to trade very clearly. So small cap index देखना है क्या आपको? Are there people still there, still around, or people have already left? Do we still have time? Only time cycle आपको सीखना है प्रतीक. फिलहाल तो हम काल चक्र, काल is times, चक्र is cycle. We are giving it only to our mentees. आपका नंबर ड्रॉप करिए. My team will see if possible. मैं चेक कर रहा था, आप लोग हो क्या अभी तक? मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करने वाला था, और अगर आप लोग हो तो मैं स्मॉल कैप इंडेक्स पे बात कर सकता हूं. आर यू देयर गाइस, पीपल ऑन यूट्यूब, आर यू देयर और नॉट? मेक सम नॉइज यार, तो पता तो चले आप लोगों को. ओके, दिस इज दी, ओके, यहां पर स्मॉल कैप है. स्मॉल कैप इंडेक्स का एक चार्ट मैंने बनाया था वेव पैटर्न के साथ में. क्या चार्ट है, जबरदस्त सपोर्ट है. ये एक ट्रेंड लाइन है. दिस इज अ बिग गैप डाउन जो अप्रैल में हुआ था, एंड दिस इज द सपोर्ट. एंड व्हाट अ मूव, अमेजिंग मूव. गोल्ड सिल्वर की बात हम करेंगे मास्टर क्लास में कल के दिन. And what a move. So I think we are completing a major move. And if you remember, I've mentioned about post 12th December, small cap should outperform. I think small cap should outperform. Sir, all are speechless by witnessing today's time cycle power. You are time rider already. Your levels are Dhurandhar. Heads off. Thank you very much. So I think small cap is going to outperform from here. We might be completing a very important लेवल एंड वी शुड हेड हायर. तो जो जो लोग वेट करे कि यार हमारा पोर्टफोलियो में पैसा बन नहीं रहा है, आई थिंक द मार्केट इज पॉसिबली रिवर्सिंग. एंड रिमेंबर, आई माइट चेंज माई स्टैंड if tomorrow price action changes and Nifty reverses down, I will change my stand. Okay, it's very important. You should know when you have to change your stand. It's very very crucial. फैंटास्टिक गाइस. तो आई थिंक बहुत सारी चीजें डिस्कस की. अभी एक काम करेंगे, हम कल के दिन मिलेंगे 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे मास्टर क्लास में. वहां पर बात करेंगे टाइम के बारे में. गोल्ड देखेंगे, सिल्वर देखेंगे, निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे, सबके टाइम की बात करेंगे
वेव थियरी तो हमने काफी बार किया है। टाइम साइकिल के लिए कौन कौन है यहाँ पर जो जुड़ रहा है मेरे साथ में मास्टर क्लास में, एक बार बताएंगे क्या प्लीज आप लोग? वो तो मजा आएगा यार, लोग नहीं होते तो मजा नहीं आता है सिखाने में, बिकॉज इफ यू आर देयर देन इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न, टू टॉक अबाउट व्हाट आई एम सीइंग। विदाउट you all, I don't enjoy because it then I'm anyways trading. Super. Super सेबी ऊपर. Thank you very much. You are going to be there tomorrow. Hiren Babu. श्रीधर आप हो यहाँ पर? फैंटास्टिक नीरज, कृपर, मनोज। श्रीधर हमारा सेशन अभी जैन में होगा, नेक्स्ट वीक नहीं कर पाएंगे। अमर, लवली एंड महक कह रहे सर यू आर गाइडेंस हेल्प मी अलॉट, इट मींस अलॉट फॉर मी, ऑलवेज अर्ली वेटिंग फॉर योर ट्वीट, ग्लैड टू नो दैट। दीपक आप भी आने वाले, फैंटास्टिक ऋषि। चलिए चलिए, बहुत सारे जन आ रहे हैं। और कौन कौन आज जुड़ रहा है? मैं ब्रह्मास्त्र में कोई आ रहा है क्या आज के दिन में? लिंक शेयर कीजिए सबके साथ में। किलर विजडम के लिए सनी आप आ रहे? ओके सुपर। तो अगर सोचिए ना, ये 2-2 घंटे में, ये फ्राइडे एट 4 में इतना कुछ सीखते हैं आप लोग, तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे फॉर लाइफ टाइम, कितना कुछ सीखेंगे। ब्रह्मास्त्र में हम वही चीज करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर एंड प्लीज रिमेंबर व्हाट एवर आई एम डूइंग इज प्योरली लर्निंग, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको, अपना रिस्क समझना है, देयर इज ऑलवेज रिस्क, इंश्योर देयर इज नो गारंटी इन मार्केट। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।